ओके, सो बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 6। संतोष सर ने हमको बताया कि आप लोग से यूनिट 6 के बारे में थोड़ा बातचीत करने के लिए कि यूजीसी नेट का सिलेबस में यूनिट 6 का जो पार्ट है उसमें आपका रिग्रेशन है, उसमें आपका इकोनोमेट्रिक्स है और जो लीनियर मॉडल्स है, ये तीनों टॉपिक को एक साथ इन लोगों ने यूनिट 6 में डाल दिया है। तो बेसिकली जितना सिलेबस है उस सिलेबस में हम लोगों को ज्यादा प्रेशर मतलब रिग्रेशन में ही देना चाहिए। रिग्रेशन उसका जो साथ साथ जो टॉपिक्स है उसके टॉपिक्स को, तो आई विल टेक 2 to 3 days टू कवर इट अप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में जाएंगे और रिग्रेशन के साथ साथ लीनियर मॉडल भी पैरेलली चलता है। आई थिंक आप लोग जितना भी इधर प्रेजेंट है रिग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। रिग्रेशन क्या काम करता है, क्या मतलब हाउ इट प्रेडिक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेट्रा। तो हम लोग उतना उसमें नहीं जा रहे, हम लोग एकदम से यूजीसी नेट का जो मतलब क्वेश्चन स्टाइल जो होता है, ठीक है। अभी तक एक भी सैंपल भी नहीं है हमारे पास एक प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन भी नहीं है नेट वाले की तरफ से, बट वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जितना हो सके कि हम लोग पूरा 100% आंसर कर पाए इसके चलते, ठीक है। तो मैं जो इधर जो भी नोट करूंगा ना वो आप लोगों को सर शेयर कर दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, तो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को उतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग बस सुनते रहिए चीजों को। जहां पर दिक्कत होगा समझने में उस जगह पे मुझे तुरंत पिंग कर लीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिग्रेशन मॉडल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल। सो व्हाट इज अ सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल? लेट मी write it here. Okay, yeah, simple linear regression model. So suppose we have y is our dependent variable, or you can say study variable, that is equals to beta naught plus beta 1 capital X plus epsilon. So here beta naught is our intercept parameter, beta 1 is our slope parameter, and capital X, this is the exploratory variable, or you can say independent variable. Okay, and here that epsilon, this is the error component. So what is epsilon? Epsilon that follows normal distribution with 0 and sigma square. This is our assumption that all epsilon i's, or you can say epsilon i's, the error components that should identically and independently distributed normal distribution where with mean 0 and variance sigma square. Okay, so here sigma square is the constant. Okay, if sigma square is not constant, suppose in a particular case epsilon I that follows normal 0 comma sigma I square. Okay, so in that case the violation, that will be a violation for the assumption of simple linear regression model, and it is called the heteroscedastic model. Okay, हम लोग बाद में जब हेटेरोस्केडासिटी डिस्कस करेंगे उस टाइम हम लोग आएंगे। ओके, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके कितना y क्या होता है, x क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर लिया है। ओके, then we can easily find the expected value of y. So basic assumption is that the expected value of y, that should be beta naught plus beta 1 x. Okay, why? Because of expectation of epsilon that is equals to 0. So since it is our assumption of expectation of epsilon equal to 0, that is why expectation of y equals to beta naught plus beta 1 x, and variance of y, that is equals to sigma square. So if you want to write as
the conditional mean of y given x. So now we are going to put the value of x, small x. Okay. So in that case, expectation of y given capital X equal to small x equals to beta naught plus beta 1x, and variance of y given, also we can write a variance term that is equals to sigma square. ओके ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें x का कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है. ओके राइट. सो दिस आर द बेसिक सिंपल assumptions of simple linear regression model, or we can write it as a SLR. Okay, simple linear regression. तो इसमें हम लोगों के पास कुछ कुछ इंडिपेंडेंस के साथ भी assumptions है. फॉर एग्जांपल all xi's are independently distributed, independently collected, sorry, not distributed, collected. Okay, and the error assumption. Error assumption is the one of the main assumption for simple linear regression. Okay, now how we can find the estimation of beta and beta y, right? So that for that reason we will be using least square estimation, or we can say LSE. Okay, so लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में क्या होता है, ये भी वो इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? सो लेट मी राइट इट. So both the mean of y and conditional mean of y are same. No, not same. So basically we are putting the value of x, ये जो x है ना, that x is the variable. Okay, so suppose you are given x equals to 3, so expectation of y will be beta naught plus 3 beta 1. For example, you are given the value of the independent variable equals to 5, so in that case that will be beta naught plus 5 beta 1. Okay, so expectation of y हम लोग जब यूज कर रहे हैं जब हमारे पास x का कोई वैल्यू नहीं है, राइट? x का वैल्यू गिवन नहीं दिया है, मतलब दिया हुआ नहीं है. जब हमारे पास अवेलेबल होगा इसका वैल्यू, देन वी विल बी पुटिंग दैट कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, वेयर x इज द वेरिएबल. संजीवनी यादव जो लिखे हो ना तुमने, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x होगा क्योंकि x इज द वेरिएबल. ओके फाइन. ओके, सो लिस्ट का एक्सटेंशन स्टार्ट करते हैं. तो लिस्ट का एक्सटेंशन में हम लोगों के पास सपोज हम लोग हमेशा क्या करेंगे ना, वेरिएबल को जो है वेरिएबल को ऑलवेज कैपिटल से डिनोट करेंगे, और जो वैल्यूज होगा उसको हम, और जो ऑब्जर्वेशंस होगा उसको हम स्मॉल x में डिनोट करेंगे, स्मॉल x स्मॉल y ऐसे डिनोट करेंगे. ठीक है. सो हियर सपोज वी आर गिवन द ऑब्जर्वेशंस x1 y1 x2 y2 in this way xn yn, right? Okay, so suppose these are the paired observation. Why it is a paired observation? Because we are considering y is the dependent variable and x is the independent variable. So obviously you should have a paired observation. Okay, regression level जब करेंगे SLR जब use करेंगे paired observation होगा. And what is our model? Model is yi equals to beta naught plus beta 1 xi. Here we are inputting small xi because we have the observations. राइट, वी हैव ऑल द xi एंड yi. सो ये क्या है, ये हमारे पास xi yi, तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है ना. सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट द रिग्रेशन मॉडल लाइक दिस. ओके, वेयर i इक्वल्स टू, ये भी हम लिख सकते हैं 1 to n. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो लिस्ट का एस्टिमेशन का मेथोडोलॉजी है उसमें क्या बोलते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स निकालेंगे, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ error which is the function of beta 1 and beta 1, which is the function of the parameters. पैरामीटर का फंक्शन होगा एक, ठीक है, ये कोई वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, पैरामीटर का फंक्शन है. सो दैट इज समेशन एप्सिलॉन i स्क्वायर. तो ये हमको पता है ये क्या होता है, ये होता है समेशन एप्सिलॉन i को निकालेंगे कहां से, ये जो मॉडल है मॉडल से हम निकाल सकते हैं yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi उसका होल स्क्वायर. सो हमारे पास अगर ये सम ऑफ स्क्वायर्स होगा इसको हम डेरिवेटिव करेंगे. वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बीटा नॉट. एक बार बीटा नॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे और एक बार बीटा 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे.
और ये दोनों हम लोग जब दोनों इक्वेशंस मिलेगा, दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज द एस्टिमेट। एक आएगा बीटा बी नॉट का मतलब होता है बीटा नॉट हेड व्हिच विल बी लाइक y बार माइनस b1 x बार। हम उसमें नहीं जा रहे, जो कैलकुलेशन से डेविएशन है उसमें हम घुस ही नहीं रहे, क्योंकि आई होप कि तुम लोगों को डेरिवेशंस को उतना देखना नहीं है, क्योंकि इसमें जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना उसमें डेरिवेशन को उतना इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। फिर भी ये तो बहुत बेसिक डेरिवेशन है, तुम लोग आई होप तुम लोग कर सकते हो। अगर नहीं कर पाओगे डेरिवेशंस तो मुझे बता देना, हम तुमको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पे हम लोग ये चीज कवर करने का ट्राई कर रहे हैं ना, तो डेरिवेशन में, हाँ राइट यस, डेरिवेशन नहीं चाहिए। सो बी नॉट इज लाइक दिस एंड what is b1? b1 is beta 1 head, that will be like sxy by sxx. So हम लोग सबको पता होना चाहिए sxy क्या है। sxy है summation xi minus x bar into yi minus y bar, and sxx का क्या होता है summation xi minus x bar उसका होल स्क्वायर। ये फॉर्म है हम लोगों के पास, ठीक है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि मान लो हमारे पास एक रिग्रेशन मॉडल है, हमारे पास डेटा है, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स, देन व्हाट, देन वी एक्चुअली डू फिट द मॉडल। सो वी शुड हैव अ फिटेड मॉडल। फिटेड मॉडल क्या होता है? y इक्वल्स टू b नॉट प्लस b1x. Okay, this is the fitted model. So if we have the fitted model, then obviously we can have the predicted value yi hat equals to b naught plus b1 xi, right? So since we have the predicted value and the observed value, ये जो observed value है हमारे पास, so इसको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं residuals. So what is residuals? Residual is the observed value and the difference between the observed value and the predicted value. So what is our observed value? yi minus yi hat. So this is the residuals. Okay, residuals याद रखना क्या होता है, observed minus predicted. तो residuals का कुछ प्रॉपर्टीज है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एक प्रॉपर्टीज हो गया summation xi ei equals to 0। हम लोग इधर नोट किया है, मान लो ei is our residuals. Okay, so sum over xi ei that should be 0। एक हो गया sum over yi hat ei that is equals to 0। अगर ये सब नहीं होगा ना तो इसका मतलब होगा कि ये आइदर बायस्ड मॉडल है या फिर हेटेरोस्केडास्टिक मॉडल हो जाएगा, ठीक है, अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा तो। इसके अलावा और भी चीज है summation yi that is summation yi hat. So sum of the all observed value, sum of ei also, yes, sum of ei also 0 is the assumption. This is our assumption because ei follows normal distribution with 0 mean. So right, of course this is a property, but ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा याद रखने का ट्राई करना, ठीक है। और जो sum of the observed value is equals to the sum of all the predicted values. And फोर्थ जो पॉइंट है कि हमारे पास जो मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट मतलब एक्स बार एंड वाई बार। तो जो फिटेड लाइन है, फिटेड लाइन शुड गो थ्रू द मीन वैल्यू। फिटेड जो लाइन होगा वो मीन वैल्यू के ऊपर से जाएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ओके, ये 4 चीज याद रखना। Next one is the inference. So basically when we have the estimated value, list का estimated value of beta naught and beta 1, we should also see what is the inference of this, मतलब कि unbiased है कि नहीं, blue हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज भी हम लोगों को देखना चाहिए। So of course expected value of b naught that will be beta naught, and expected value of b1 that will be beta 1. So they will basically follow the unbiasedness property. Okay, unbiased होगा, and variance of b naught that will be
सिग्मा स्क्वायर 1/n x बार स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स, ये भी तुम लोग पता होना चाहिए। एस एक्स एक्स तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये वेरिएंस ऑफ बी नॉट है एंड वेरिएंस ऑफ बी वन हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एस एक्स, मतलब सम स्क्वायर ऑफ एक्स। ये दोनों चीज तुम लोगों ने याद रखने का जरूरत होगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि वेरिएंस ऑफ द बीटा बी नॉट क्या होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम ही रहता है, वेरिएंस ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट ही रहता है, और बी वन का एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा वन रहता है, लेकिन वेरिएंस दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है, ये याद रखना। और इसके साथ एक और है, कोवेरिएंस ऑफ बी नॉट एंड बी वन, दैट इज माइनस ऑफ x bar by a66 sigma square. So basically the correlation between b0 and b1 depends on the mean x bar. x bar अगर positive होगा then there will be a positive correlation between b0 and b1. x bar अगर negative होगा तो in that case b0 and b1 के बीच में कोई negative correlation होगा, ठीक है। बस ये तुम लोग याद रखिए, क्योंकि कोवेरिएंस टर्म अगर नेगेटिव हो रहा है ना, ये जो सॉरी मैंने आई थिंक गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, एक एक्स बार के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ एक्स बार इज नेगेटिव देन इट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, इफ एक्स बार इज पॉजिटिव देयर विल बी नेगेटिव कोरिलेशन, ओके, क्योंकि पहले एक माइनस है। तो ये दो तीन चीज तुम लोग याद रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट वन इज द ब्लू प्रॉपर्टी, मतलब कि ये जो हम लोगों ने वेरिएंस निकाला कि ये जो वेरिएंस आया वेदर इट इज द लीस्ट वेरिएंस, मतलब ब्लू कब होता है, एक होता है कि अनबायस्ड होना चाहिए, एक होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट अनबायस्ड एस्टिमेटर्स होगा, और तीन हो रहा है कि मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों रीजन होना चाहिए। तो जो हमारा जो प्रॉपर्टी है OLAC, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, जो OLAC होता है इज द ब्लू ऑफ बीटा। So basically this property will come from Gauss-Markov theorem, okay। मैंने इधर थोड़ा लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में हम लोग Gauss-Markov theorem डिस्कस कर लेंगे एक बार। बट द थिंग इज कि जो हम लोग ऑर्डिनरी लिस्ट का एस्टिमेटर मिल रहा है हम लोगों को, दैट शुड बी द ब्लू, ओके, ये प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास जो बी नॉट आया, बी नॉट इज ब्लू, बी वन जो आया वो भी ब्लू है, ओके। नेक्स्ट वन इज सिग्मा स्क्वायर। सो हम लोग अभी तक बात किए बी नॉट एंड बी वन के बारे में, बट व्हाट अबाउट सिग्मा स्क्वायर? So sigma, for to find the estimate of sigma square, you can use sum of squares of residual. Okay, so what is sum of squares of residual? That is summation ei square, that is summation yi minus yi hat whole square. ये फॉर्म है sum of square of residual का। So ये जो वैल्यू होगा that will be SYY minus B1 SXY। इसका बहुत सारा फॉर्म आ सकता है। तुम लोग को अगर एग्जाम में ये चीज आता है कि व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स, तो B1 के जगह पे SXY बाय SXS के भी बोल सकते हैं इसको, इसके जगह पे, राइट। तो ऐसा बहुत सारा फॉर्म है, जैसे कि मैं इधर लिख ही दे रहा हूँ, SYY माइनस B1 स्क्वायर इंटू SXX, ये भी एक फॉर्म है। एक और फॉर्म होगा SYY माइनस SXY स्क्वायर बाई SXX। ये सब फॉर्म 2 नंबर फॉर्म है, ये 3 नंबर फॉर्म है, ये सब अलग अलग रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक फॉर्म अगर याद रहेगा तो तुम लोग आई थिंक इजीली कर पाओगे कि दूसरा वाला फॉर्म क्या क्या है। तो अभी एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल, और उसको अगर सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये जो टर्म है दैट विल फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n minus 2। सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ sum of squares residual, that is n minus 2 sigma square. So here why we lost 2 degrees of freedom? देखो इधर जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वही 2 degrees of freedom कम हो रहा है, n minus 2 आ रहा है, राइट। सो और एक्सपेक्टेशन में भी हम लोगों को सम ऑफ स्क्वायर्स रेसिडुअल का जो एक्सपेक्टेशन है
स्प्लिट वैल्यू है वो है n-2 सिग्मा स्क्वायर. सो व्हाई वी हैव टू लेस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द टू एस्टिमेटर्स. What are the two estimators? One is B0, one is B1. Since we have two regression parameters in our regression model, that is why it is n-2. Okay, if we have three regression parameters, that in that case it will have n-3 sigma square. Okay, so this is why it is called the model dependent estimate. So हम लोग जो SS square, we can write SS square equals to SS residual by n-2, क्योंकि expectation of SS square हम लोग को क्या चाहिए, sigma square चाहिए. Then it will be an unbiased estimator. So SS residual by n-2, ये जो हमारे पास unbiased estimator of sigma square आया, that is the unbiased estimator of sigma square. It is actually the model dependent estimate. ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं कि मॉडल डिपेंडेंट एस्टिमेट बोलते हैं. ओके, सो बेसिकली ये तीन चार चीजें हम लोगों को जानना चाहिए इन्फरेंस के बारे में. मान लो वी हैव सपोज वी हैव अ रिग्रेशन मॉडल yi इक्वल्स टू बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन i. सो बेसिकली तुम लोग घर पे जब प्रैक्टिस करोगे एक बार दो बार, तो ये चीज पेपर देख लेना कि इट इज कॉल्ड अ नो इंटरसेप्ट मॉडल. So how a no intercept model look like? This is what. So here we do not have any B0, beta naught क्योंकि नहीं है इधर, तो that is why it is a no intercept model. And इसके जब हम लोग estimate निकालेंगे, हम लोगों को बस एक ही मिलेगा, that is beta 1 hat, मतलब B1. तो वो आएगा summation xi yi divided by summation xi square. Okay, and in that case, expectation of B1, that will be our beta 1, variance of B1, that will be sigma square by summation xi square. No. Centered model is different. Okay, centered model is different. Matlab, so basically, suppose we have observations. Let me do that here. So what you are asking, let me see. It is also known as the centered model. Okay, so look what centered model does. Suppose we have observations x and y, and these are the observations. Okay, so here we have a particular x bar, we have particular y bar. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग all xi के साथ x बार माइनस करेंगे, ऑल yi के साथ y बार माइनस करेंगे. सो ये जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो अभी चेंज हो जाएगा, चेंज होके ऐसा दिखने लगेगा. ओके, तो दिस इज द सेंटर्ड मॉडल. Okay, as per my knowledge, thus centered model and no intercept model are different. Centered model means we actually do a preprocessing step where all xi's are centered, all yi's are sent to be centered, and then we do the regression. Okay, Ajit, I hope. Okay, so remember these are different. Okay, fine. So हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि नो इंटरसेप्ट मॉडल में क्या क्या होता है. So basically I think I also skip one SMS. Sir, is the fourth property already holds the irrespective of presence of slope? Fourth property, I think रेसिडुअल का. ओके, ये जो प्रॉपर्टी है ना, यस, हाँ, एक्चुअली जो लाइन रिग्रेशन लाइन होता है, सो रिग्रेशन लाइन ऑलवेज सेटिस्फाई दिस पॉइंट.
ये जो पॉइंट है x बार y बार, इस पॉइंट को हमेशा सेटिस्फाई करेगा रिग्रेशन लाइन, दैट इज व्हाई वी इंक्लूड दिस प्रॉपर्टी। ओके, कोई भी स्लोप हो जाए ये तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसी स्लोप के आसपास वो टेंड होता रहेगा, ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा इसलिए। Regression line, yes, yes, always pass through the mean point. Okay, fine. So हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग हाँ, जो नो इंटरसेप्ट मॉडल थे उसमें डिस्कस कर रहे थे। So look, here we have expectation of B1 and variance of B1. So also we can also have S square, जो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, हम लोग पहले बोला वही एस स्क्वायर, दैट इज समेशन yi स्क्वायर माइनस b1 समेशन xi by n minus 1. So here we will be having n minus 1 degrees of freedom. Why? Because we do not have beta naught. Since we do not have beta naught, we have only one regression parameter, beta 1. That is why only one dependency. That is why it is n minus 1. Okay. So देखो अभी क्या है कि बहुत जगह पे ऐसा ऐसा मॉडल भी आता है, yi इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन सपोज x प्लस बीटा टू एक्स स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन i। तो इस रिग्रेशन लाइन का जो बीटा नॉट क्या होगा, बीटा वन क्या होगा, बीटा टू क्या होगा, ये सब आई थिंक ये सब थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम्स है, देना नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन पता नहीं क्या आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन में क्या आएगा। सो आई होप कि तुम लोग थोड़ा इसको ऐसा इसको थोड़ा बहुत देख लेना कि कैसे लिस्ट कर करके वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर पे नहीं आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन कि इसका भी टर्न बीटा वन क्या होगा, फिर भी देख लेना थोड़ा एक बार। ओके, देन हम लोग एक काम करते हैं, चलो ओएलएसी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, हम लोग एमएलई ट्राई करते हैं। एमएलई में भी प्रॉपर्टीज है कुछ, मतलब हमारे पास एक रिग्रेशन मॉडल है yi इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन xi प्लस एप्सिलॉन i, स्मॉल xi होगा, ओके, वेयर i इक्वल्स टू 1 to n, एंड हमारे पास एप्सिलॉन i का डिस्ट्रीब्यूशन पता है। So what is the distribution of epsilon i? That is normal 0, sigma square. So MLE, to find MLE, we have to find a likelihood function. So likelihood function of what? Likelihood function of the observations xi, yi, of the parameters beta naught, beta 1 and sigma square. So we have to find a likelihood function of xi, yi, beta naught, beta 1, sigma square. So how we can do that? First of all, we can find the distribution of yi. So if epsilon i follows normal, yi should also follow normal distribution with mean beta naught plus beta 1 xi and variance sigma square. So ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर yi का डिस्ट्रीब्यूशन where I equals to 1 to n. So we can find the likelihood function. So likelihood function of xi, yi, beta naught, beta 1, sigma square, ये जो आएगा ये क्या आएगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल i इक्वल्स टू 1 to n 1/2 pi sigma square to the power half e to the power minus 1/2 sigma square yi minus beta naught minus beta 1 xi। इतना भी मैंने लिख दिया छोटा मोटा करके, ठीक है, ये उतना वो नहीं है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है इस लाइक्लीहुड फंक्शन को हम लोग लॉग लाइक्लीहुड निकालेंगे, लॉग लाइक्लीहुड निकालने के बाद पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। ये मेथोडोलॉजी है एक एमएलई निकालने के लिए, ठीक है, ये मेथोडोलॉजी यूज होता है। तो 0 के साथ इक्वेट करने के बाद क्या होगा, अगर तुम लोग ट्राई करोगे तो अल्टीमेटली जो आएगा वो है बी नॉट इक्वल्स टू जो हम लोग को एलएसी में मिला था वही आएगा b1 x बार एंड b1 इक्वल्स टू sxy बाय sxx।
बी नॉट एंड बी वन जो होता है मतलब बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन हैट का जो वैल्यूज है वो सेम ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दैट मीन्स दैट इज द बी नॉट ऑफ ओएलएसी, दैट इज द बी वन ऑफ ओएलएसी, सेम रहेगा। बट जो सिग्मा स्क्वायर का जो एस्टिमेट आएगा मतलब एस स्क्वायर एम एल ई, दैट विल बी summation yi minus b naught minus b1 xi square divided by n. So basically, or we can easily write like that, summation yi minus y bar whole square by n. So देखो हम लोगों को जो OLSC में मिला था इस स्क्वायर ऑफ OLSC दैट वाज समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर बाई n माइनस 2। तो डिफरेंस यही है दोनों में से कि इन OLSC we have the degrees of freedom of n minus 2, in MLE we have n. So basically S square MLE is a biased estimator. It is a biased estimator of sigma square. ये चीज याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अच्छा खासा, कभी कभी बहुत जगह पे पूछता है, ठीक है। सो बट देयर इज अ कैच। व्हाट इज द कैच? इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, इन दैट केस इट इज अनबायस्ड, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी में क्या होगा कि n माइनस 2 जो होगा n का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है ना। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिकली unbiased. Asymptotically unbiased. So MLE of the regression parameter sigma square is biased, okay, but asymptotically unbiased. तो ये सब चीजें, दो तीन चीजें तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। और इसके साथ तुम लोग को ये भी देख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन दिस एस स्क्वायर एम एल ई दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 2 बाई n इंटू एस स्क्वायर ओ एल एस सी, ये इसका रिलेशन है, ठीक है। तो ये तक एस्टिमेशन का पार्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए इधर तक की है। इसके बाद जो होता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस चीज का हो सकता है? ये जो बी नॉट है, बी वन है, जो हम लोग जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है उसके साथ सेम है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हेडिंग रखते हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर, सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लोप के साथ। स्लोप पैरामीटर, स्लोप पैरामीटर मतलब बीटा वन। So in that case, we have two situations. One is sigma square known and one is sigma square unknown. So when sigma square is known, तब क्या होगा? So what is our null hypothesis? Null hypothesis is that beta 1 equals to beta 1 not, जो hypothesized value है वही होना चाहिए, and alternative is not equals to this, ठीक है। Alternative is beta 1 not equals to beta 1 not. Now what B1 follows? B1 follows normal beta 1 comma sigma square by SXX। हम लोग को अभी मिला है, थोड़ी देर पहले हम लोग एस्टिमेशन में देखा था कि B1 का एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है बीटा 1 एंड उसका तुम्हारा वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर बाय SXX। दैट इज व्हाई द मीन वेरिएंस लुक लाइक दिस। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ xi है, ये सब रीजंस है, ठीक है। ओके, so the test statistic that follows Z, क्यों Z है? क्योंकि नॉर्मल फॉलो करेगा B1, that is why B1 minus beta 1 not is the hypothesized value divided by standard error sigma square by SXX. So that will follow normal 0 1, and we reject null hypothesis if our value of Z that is greater than Z alpha by 2 mod of Z, ठीक है।
तो एब्सोल्यूट जेड का जो एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये बोथ साइडेड टेस्ट है, बोथ साइडेड टेस्ट है इसीलिए ले रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, और इसके साथ हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकल सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, जो b1 माइनस जेड अल्फा बाई 2 रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर बाई a66, ये है लोअर लिमिट, एंड अपर लिमिट इज b1 प्लस जेड अल्फा बाई 2 रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर बाई a66। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो बेसिकली हम लोग बहुत टाइम मतलब ऐसा देखे थे कि लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो पार्ट है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, इसको अवॉइड करते हैं लोग, ठीक है, कि अरे नहीं ये तो थोड़ा कैसा दिखता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अवॉइड नहीं करना चाहिए, इधर से कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत जगह पे ये चीज चाहिए होता है, ठीक है, कि एक स्लोप पैरामीटर एक इंटरसेप्ट पैरामीटर इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे इसको। हाँ, इसको फॉर्मूला उतना डिफिकल्ट है नहीं, और हर एक बी नॉट बी वन का मीन और वेरिएंस तुम लोग याद रखना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा तो क्या होगा, सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जब सिग्मा स्क्वायर अननोन होता है हम लोग उसकी जगह पे रेसिडुअल सम स्क्वायर यूज करते हैं, कि हम लोग मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था एस एस रेसिडुअल बाय सिग्मा स्क्वायर दैट फॉलोज काई स्क्वायर n minus 2 that implies expectation of एस एस रेसिडुअल बाय n minus 2 that is sigma square। तभी तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटेड हुआ था एस एस रेसिडुअल बाय n minus 2। so here we are using this for सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर के जगह हम लोग उसका जो एस्टिमेट है वो यूज करेंगे, बस काम खत्म। तो since it is unknown, since sigma square is unknown, so it will be a t distribution। so t distribution क्या होगा, b1 minus beta 1 नॉट divided by root over sigma square by a66 था, इसकी जगह सिग्मा हेड स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली b1 beta 1 नॉट divided by ss residual by n minus 2 a66 that will follow tn minus 2 की डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा ये। तो दो चीज है, एक है सिग्मा स्क्वायर नोन के लिए, एक है सिग्मा स्क्वायर अननोन के लिए। तो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। हम लोग इसको छोड़ रहे हैं कि तुमको लोगों को पता ही होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, कि जो b1 माइनस t इंटू ये जो तुम्हारा रेसिडुअल का वैल्यू है वो होगा, एंड b1 प्लस t इंटू वही सेम वैल्यू। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आई थिंक इजिली निकल जाएगा अगर हम लोग के पास स्टैंडर्ड एरर और मीन जो है वो है हमारे पास अवेलेबल। सो दिस इज द बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर p1, राइट, स्लोप पैरामीटर। हम लोग स्लोप पैरामीटर से स्टार्ट किए थे। सो आल्सो वी कैन हैव द हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर इंटरसेप्ट पैरामीटर। सो रिमेंबर we will only do that if intercept parameter is present in the model। कभी कभी हो सकता है कि इंटरसेप्ट पैरामीटर मॉडल में प्रेजेंट है ही नहीं, सो इन दैट केस हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है। सो व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, ये भी दो केस होता है, तो सिग्मा स्क्वायर नोन होगा, एक सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा। तो सपोज हियर वी हैव null hypothesis beta naught equals to beta naught not, and suppose alternative beta naught is not equal to beta naught not। so in that case our z is equals to b naught minus beta naught not by, now the variance of b naught वो हम लोग को याद रखना जरूरी है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, सिग्मा स्क्वायर इंटू 1 बाई एन प्लस एक्स बार स्क्वायर बाई a66। so that follows normal 0 1। so we will reject the null hypothesis if reject if absolute value of z is greater than z alpha by 2, बस ये चीज है। so from here we can also find the confidence interval, वो भी हम निकाल सकते हैं, राइट। so क्या होगा, b नॉट माइनस z इंटू ये जो टर्म होगा ये, एंड b नॉट प्लस z इंटू ये सेम टर्म, राइट। तो ये हम छोड़ रहे हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। आई होप कि तुम लोग निकाल पाओगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, उतना डिफिकल्ट है नहीं, बट ये चीज याद रखना जरूरी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल मत याद रखो, तुम लोग बस वेरिएंस टर्म याद रखना, ठीक है। वेरिएंस टर्म याद रखोगे तुम ऑटोमेटिकली एक सेकंड में निकल जाएगा क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल।
ओके, एंड सिमिलरली इफ सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, जब सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा, उसी याद करो हम लोगों ने रेसिडुअल यूज किए थे। सो जो z यूज किए थे ना, ये जो लास्ट पेज में देखो हम लोग जो z यूज किए थे, सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, इसको हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखो, ये जो टर्म हम लोगों ने लिखे थे, इसके जगह पे ना हम लोग क्या क्या रिमूव करेंगे। ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये नहीं रहेगा, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो सिंस सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, ये z नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके, तो t इक्वल्स टू सेम, पूरा सेम रहेगा, बी नॉट माइनस बीटा नॉट नॉट डिवाइडेड बाय रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेट क्या है, एस एस रेसिडुअल बाई n माइनस 2, और बाकी जो टर्म था वही रहेगा बस। तो दैट विल फॉलो t with degrees of freedom n minus 2. So basically here we can also find the rejection region. So basically reject null hypothesis if absolute value of t is greater than t n minus 2 alpha by 2, and confidence interval भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, b नॉट माइनस t इंटू ये जो रेसिडुअल है, सॉरी स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर है, और b नॉट प्लस t इंटू ये जो स्टैंडर्ड एरर है इधर। तो इसी को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट है नहीं, तुम लोग बस एक चीट शीट बना लेना, बस कुछ स्टैंडर्ड एरर को याद रखने के लिए, तो आराम से तुम लोग निकाल पाओगे। नेक्स्ट वन इज वी हैव अनदर अननोन पैरामीटर दैट इज सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर का टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो उसके लिए देखो, एक है कि हमारे पास नॉन सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर इज नॉन, तो उसको सपोज मान लेते हैं हम लोग सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, और हम लोग के पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, एस एस रेसिडुअल बाई सिग्मा स्क्वायर दैट फॉलोज chi square n minus 2. So obviously we reject h naught if suppose it is our c, if c less than chi square n minus 2 alpha by 2, ये chi square का जो भी हमारे पास अल्फा ये सब जो भी आएगा, and accept h naught, accept h naught if c greater than chi square n minus 2 alpha by 2. So दिस इज द फर्स्ट वन, मतलब सिग्मा स्क्वायर का जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो काई स्क्वायर फॉलो करेगा, ठीक है। मैं इधर एक सीट बना देता हूं, एक है कि टेस्ट फॉर बीटा नॉट, टेस्ट फॉर बीटा वन, टेस्ट फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर का जो टेस्ट है वो होगा काई स्क्वायर, ओके। बीटा वन में एक है सिग्मा स्क्वायर नोन, एक है सिग्मा स्क्वायर अननोन। सिग्मा स्क्वायर जब नोन होगा, नोन केस में फॉलो करेगा जेड टेस्ट, सिग्मा स्क्वायर अननोन के टाइम पे होगा टी टेस्ट। बीटा वन में भी सेम, सिग्मा स्क्वायर नोन एंड सिग्मा स्क्वायर अननोन, सिग्मा स्क्वायर नोन के टाइम पे होगा जेड टेस्ट, सिग्मा स्क्वायर अननोन के टाइम पे होगा टी टेस्ट। बस ये सीट याद रखो, काम हो जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। ओके फाइन। सो सिंपल लिनियर रिग्रेशन में और भी दो तीन चीजें हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है एनोवा टेबल। एनोवा टेबल कैसा दिखता है, सो वी नो द एनोवा टेबल क्या होता है कि एक होता है सोर्स, होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन। सो इन सिंपल लिनियर रिग्रेशन वी हैव two sources of variation, one is regression, one is the residual। मतलब जो टोटल जो वेरिएशन है एग्रीगेशन लाइन के अंदर, जो एक्स आई वाई आई का जो वाई आई का जो वेरिएशन है उसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है
वेरिएशन ड्यू टू रिग्रेशन एंड होता है वेरिएशन ड्यू टू रेसिडुअल। इसका मतलब क्या है, जो रिग्रेशन मॉडल है, दैट रिग्रेशन मॉडल कितना परसेंटेज वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज द रिग्रेशन वेरिएशन। एंड ड्यू टू रेसिडुअल, रेसिडुअल मींस एरर, दैट पोर्शन ऑफ वेरिएशन is not explained by our regression model. That portion of variation is not explained by our regression model. That is the variation due to residual. ये दो चीज है। और इसके साथ हम लोगों के पास टोटल वेरिएशन है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स एक आएगा हम लोगों का पास, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो फर्स्ट वन इज sum of squares due to regression and second one is sum of squares due to residual and total is total sum of square SYY। SYY मतलब क्या है कि SYY मतलब summation yi minus y bar whole square, total variation of y। वही तो देखना है कि वो जो टोटल y का जो इतना वेरिएशन है वो कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, हाउ मच वेरिएशन ऑफ y एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन मॉडल, दैट इज sum of squares of regression. Okay, and we have degrees of freedom. So since we have only one parameter which is explanatory, beta 1, that is why it is 1. Okay, and total degrees of freedom is n minus 1, that is why residual have n minus 2 degrees of freedom. So suppose when we will be talking about multiple linear regression, in multiple linear regression, suppose there are k number of parameters, okay, k number of betas, beta naught, beta 1, beta 2, beta k. Okay, in that case k minus 1 is our degrees of freedom. So here we have beta naught and beta 1, that is why 2 minus 1 is 1 degrees of freedom. Okay, so from here we can find mean square. So mean square is sum of mean square regression or mean square of error, and using this we can find f. F is the f statistic. We compare with the tabulated value, rejected or accepted model, जो भी है हम लोग करेंगे। How we calculate sum of squares of regression? इसमें SYY तो कैलकुलेट कर सकते हैं, और SS रेसिडुअल, पहले रेसिडुअल कैलकुलेट करते हैं। रेसिडुअल का फॉर्मूला है SYY माइनस SXY होल स्क्वायर बाई SXX। पहले किया हम लोगों ने, थोड़ी तो पहले एकदम स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला हम लोग ने लिखे थे। सो सिंस दोनों का सम SYY है, सो ऑफ कोर्स वी कैन राइट SS रिग्रेशन इक्वल्स टू SYY माइनस SS रेसिडुअल। सो that means that will be XY by SXX, sorry square होगा ऊपर में एक ये आएगा। So that means it is B1 SXY, or you can say B1 square SXX। बहुत लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना नोटेशंस को, कि उल्टा सीधा नोटेशंस आ गया तो दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो मतलब हम लोग बीटा 1 की जगह पे उसका वैल्यू पुट करके हम लोग दूसरा नोटेशंस भी बना सकते हैं इसका, इसलिए ओके। और ये रिग्रेशन मॉडल जो है एनोवा टेबल से हम लोग एक और इंफॉर्मेशन निकल सकते हैं, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, और यू कैन राइट लाइक कोएफिशिएंट ऑफ determination. How we can calculate a coefficient of determination? So basically it is denoted as the R square. So R square is equals to 1 minus sum of squares of residual by total sum of squares, or you can write it like sum of squares of regression by SYY. So basically it is the square value of the correlation coefficient between x and y. Okay, so the value of R square is usually lies between 0 to 1. Okay. So after this, after the simple linear regression, we will move on to multiple linear regression, and at that time we will see that
we have a modified version of R square, and it will be known as adjusted R square, and somehow we can see that the adjusted R square can contain negative value. Okay, तो हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी जो R square, सिंपल R square जो हम लोग यूज कर रहे हैं इधर इधर, now right now that R square should always lies between 0 and 1, because जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स है उसका कितना पोर्शन is explained by the regression, that is the R square. So what is the interpretation of R square? R square means the proportion of variation is explained by the regression model. That is why sum of squares due to regression is in the numerator and total sum of squares is the denominator. ये जो term हमने लिखे हैं, the proportion or the portion of the variation is explained by the regression. जो regression model हम लोगों ने यूज किया है वो कितना पोर्शन वेरिएशन के एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज द आर स्क्वायर, दैट इज द बेसिक आर स्क्वायर. ओके, सो इतना तक आई होप कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो भी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ये काफी होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने सिलेबस देख रहा था, तो सिलेबस में सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, आर स्क्वायर, एडजस्ट आर स्क्वायर, गॉस मार्कअप थ्योरम भी सिलेबस में है. जो गॉस मार्कअप थ्योरम का एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया है, तो उन सब चीज में रहेगा. और भी गॉस मार्कअप थ्योरम का प्रॉपर्टीज आएंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, वो भी हम चेक करेंगे. लेकिन उसके पहले हम लोगों को देखना है कि एक मॉडल लीनियर कब होता है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही जो है वो लीनियर मॉडल के ऊपर ही है. तो लीनियर मॉडल मतलब क्या होता है, देखो हम लोग अभी लीनियर मॉडल करेंगे, उसके बाद मल्टीपल लीनियर मॉडल में शिफ्ट कर जाएंगे. ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो जब तक था खत्म. ओके, सो व्हाट इज अ लीनियर मॉडल. सो एक मॉडल जो होता है ना, मतलब सपोज ए मॉडल इज said to be linear when it's linear in parameters. ये जो टर्म है ना, लीनियर इन पैरामीटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ये तुम लोग अच्छे से याद रखना कि एक मॉडल के अंदर दो चीज रहता है, एक रहता है वेरिएबल्स, एक रहता है पैरामीटर्स. वेरिएबल अगर नॉन लीनियर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इफ द पैरामीटर इज नॉट लीनियर, पैरामीटर का जो फॉर्म है that is not linear, then it is not considered as a linear model. But if the variables are not linear, doesn't matter. कोई बात नहीं, मतलब वेरिएबल का हम लोग कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. ठीक है, हम लोग बस चेक करेंगे कि पैरामीटर हो द पैरामीटर्स आर इन linear form or not. How we can do that? Suppose we have a model y equals to beta naught plus beta 1x. So ये जो मॉडल है इसमें देखो वेरिएबल भी लीनियर में है, एक्स प्लस तो वाई का रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप है, और जो पैरामीटर्स है बीटा नॉट बीटा 1 वो भी लीनियर है. तो दैट इज अ लीनियर मॉडल. सपोज एक और मॉडल लेते हैं y इक्वल्स टू बीटा नॉट x टू द पावर बीटा 1. मान लो ये हमारे पास एक मॉडल है. तो देखो दूर से दिखने में क्या लग रहा है कि देखो ये जो मॉडल x के पावर पे है बीटा 1, लेकिन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं. क्या ट्रांसफॉर्मेशन? लॉग ट्रांसफॉर्मेशन. सो इसको हम अगर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ बीटा नॉट प्लस बीटा 1 लॉग ऑफ x. देखो अभी ये लीनियर बन गया. क्यों भी लीनियर बन गया? क्योंकि मान लो हम लोग y डैश लिख लिया, बीटा नॉट डैश लिख लिया, बीटा 1 x डैश लिख लिया. देखो अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया. सो मतलब कभी कभी ऐसा आ सकता है कि सपोज एक मॉडल है जो दिखने में लीनियर नहीं लग रहा है, बट somehow by some transformation it becomes a linear model. कभी कभी ऐसा हो सकता है. सो इट इज ऑल्सो a linear model. ओके, थर्ड एक और एग्जांपल लेते हैं. y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस बीटा 2x स्क्वायर. सो इट इज अ पॉलिनोमियल मॉडल. लग रहा है ना पॉलिनोमियल रिग्रेशन टाइप कुछ, राइट? सो इट इज ऑल्सो लिनियर मॉडल.
क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इट इज इन नॉन लीनियर फॉर्म, बट इसका जो पैरामीटर्स है दैट आर इन लीनियर फॉर्म, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, दैट आर इन लीनियर फॉर्म, दैट इज व्हाई इट इज अ लीनियर मॉडल। हम लोग ये चेक नहीं करेंगे कि एक्स का जो रिलेशनशिप वाई के साथ ये लीनियर या नॉन लीनियर। ऑफ कोर्स इट इज नॉन लीनियर, दिख ही रहा है इधर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, राइट, बट इट मतलब हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर मॉडल। एक एग्जांपल, सपोज y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स टू द पावर बीटा टू। इसमें इसमें अगर तुम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, उसमें तुम्हारा ये पैरामीटर्स लीनियर नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा, दैट विल बी इन नॉट नॉट लीनियर फॉर्म। लॉग लॉग लोगे ना, if you take the log, do the log transformation, it never becomes a linear form. So basically here it is a non-linear model. So हम लोग कुछ एग्जांपल देखें, कौन सा एग्जांपल। नंबर वन लीनियर था, नंबर टू ये भी लीनियर था, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। नंबर थ्री ये भी लीनियर है। नंबर फोर दैट इज नॉट a linear model. Okay, फाइन। तो लीनियर मॉडल के बारे में ये बस जस्ट क्या होता है ये जानना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। गिव मी अ मिनट। ओके, next we will move on to multiple linear regression. So multiple linear regression, and eventually we call it as a MLR. So एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे दिखता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि what is the difference between a simple linear regression model and multiple linear regression model. So in real life we have y is our dependent variable and x which is the independent variable, right? So if there is only one independent variable, then it is a simple linear regression model. Okay, but when we have more than one independent variables, right? Suppose we have k number of independent variables. So let me write a model. Y equals to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta k xk plus epsilon. So here, how many explanatory variables we have? We have k explanatory variables. So basically, we have k independent or explanatory variables. Okay, right. So in that case, when we have k independent variables greater than 1, it is called the multiple linear regression. तो देखो अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, क्यों कॉम्प्लेक्स हुआ? क्योंकि when we try to find the OLAC, OLAC should not have a simple form. Since it is a there are huge number of covariates or independent variables, it will make a complex form. That is why we generally use a matrix form. Okay, एक मैट्रिक्स फॉर्म यूज करते हैं टू एनालाइज द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो कैसे यूज करते हैं? सो बेसिकली इफ वी राइट द मॉडल लाइक दिस, yi that is equals to beta naught beta 1 x1 I, that means x1 जो वेरिएबल है उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस बीटा 2 x2 I, ऐसे करते करते हम लोगों को
क्या होगा, बीटा के एक्स के आई प्लस एप्सिलॉन आई। सो सपोज ये सारे स्मॉल एक्स साइज है, ये मैंने कैपिटल कर दिया गलती से। सो सपोज वी हैव आई इक्वल्स टू 1 to n number of observations like this, okay। तो इसमें क्या होगा, y1 y2 yn, n observations are there, it forms a column vector, and we are considering beta naught, beta 1, beta 2, beta k. Here it is a column vector of regression coefficient. So if we consider the other vector or the matrix or the coefficient matrix, just look at the coefficient matrix 1, x11, x12, x1k, 1, x21, x22, it's the observation of second y, okay, x2k, ऐसे करते करते हमारे पास 1 x n1, x n2 and x nk. So this is a, how many rows are there? First of all, there are n number of rows into one column. So n cross 1 y, and it is a, how many rows are there? N number of rows into k plus 1 columns are present. And how many regression coefficient? K plus 1. So that beta is the regression coefficient, and this X matrix, the matrix is, suppose it is a X matrix, it is our coefficient matrix, and we have epsilon, means epsilon 1, epsilon 2, epsilon n. So that is also n cross 1. This is the setup. This is the setup of the regression, or you can say multiple linear regression model. Okay. ये जो setup है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्यों लिखा? So we can easily find the beta i's or the coefficient matrix. Okay. Coefficient vector. Actually, it is a vector. Or we can write like y vector equals to x matrix into beta vector plus epsilon. So this is the multiple linear regression model, and we have several assumptions. जैसा कि सिंपल लिनियर रिग्रेशन में था, ऐसे भी मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन में भी ये assumptions रहेगा, बट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब सिंपल लिनियर रिग्रेशन में we have a expectation of epsilon is equal to 0. So epsilon was a value, epsilon, but here it is a vector, right? So number one assumption is expected value of epsilon is 0, as always. Number two is expectation of epsilon dash it equals to sigma square in. मतलब expectation of epsilon dash that is equals to a matrix sigma square, all elements in the diagonal are sigma square, and all the off diagonal elements are 0. Okay, that is why it is right like sigma square in. Okay, so why it is like that? Because covariance term is 0. Because all epsilon, जो हमारा जो error term है ना, errors are independently distributed. If errors are independently distributed, obviously the covariance would be 0. मतलब covariance between epsilon I, epsilon j, that should be 0. Okay, and then we have the only the variance values, and the all are sigma square. Okay, if it is sigma 1 square, sigma 2 square and sigma n square, अगर ऐसा होता, अगर all sigma is not equal to sigma square होता, तो that will be a heteroscedastic model. Okay, क्योंकि sigma square constant है, it is a homoscedastic model. अगर constant नहीं होता, that will be a
हेटेरोस्केलेस्टिक मॉडल। तो ये तुम लोग थोड़ा याद रखना कि हेटेरोस्केलेस्टिक बाद में आएंगे ऑब्वियसली, बट स्टिल एजम्पशन हम लोग कर रहे हैं तो देखना चाहिए ये चीज। नेक्स्ट वन, रैंक ऑफ एक्स, दैट वुड बी के। ये जो एक्स मैट्रिक्स है हम लोग पिछले पेज में लिखा था, कहाँ लिखा था, ये जो इसका जो रैंक है, इसका रैंक के होना चाहिए। के, व्हाट इज के? के इज द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, ठीक है, वही हमारा रैंक होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अ फुल रैंक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज x is a non-stochastic matrix, and last one is like epsilon. All epsilons follows normal 0 sigma square in. So epsilon follows multivariate normal, ठीक है? Okay, so these are the basically the 5 assumptions. Okay, तो ये 5 assumptions के बाद हम लोग कर सकते कि OLSC, ordinary least square estimation. So OLSC करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? We should have the sum of squares of errors. So we can write the sum of squares of errors as is beta, the function of beta, that is equals to summation epsilon I square. ये हम लोग ने देखे थे ना. So how it can be derived? Epsilon dash epsilon, because it is in a matrix format. So that means it is y minus x beta transpose y minus x beta. अभी तो हम लोग एक्सप्लेन मिलेगा मॉडल जो है, ये जो मॉडल है इस मॉडल में से हम लोग एप्सिलॉन कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन इक्वल्स टू y माइनस x बीटा, ऐसे एप्सिलॉन आएगा. So we just wrote it here, right? So if we took the derivative, देखो अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम लोग गॉस मार्कअप थ्योरम यूज करेंगे. ये जो डेरिवेटिव करके जीरो होता है ना, मतलब जो रूल होता है ओएलएससी मेथड का, तो इसमें अगर हम लोग वो वैल्यू पुट, मतलब जो मैट्रिक्स है उसको पुट करेंगे, वी विल गेट x डैश x बीटा दैट इज इक्वल्स टू x डैश y. It is the normal, it is called the normal equations. So Gauss-Markov theorem says that the solution of this normal equation, जो इसका जो solution normal equation का solution होगा, that will be our b equals to beta hat equals to x dash x inverse x dash y. That comes from Gauss-Markov theorem. And what is the condition? There are two conditions. First condition is that rank of x that should be equals to k. हम लोग जब एजम्पशन में करे थे ना, एजम्पशन अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले, कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का क्या एजम्पशन होगा, तो उस एजम्पशन के हिसाब से फ्रॉम दिस एजम्पशन वी शुड हैव रैंक ऑफ एक्स, एक्स मैट्रिक्स का जो रैंक दैट शुड बी इक्वल्स टू के. दैट मींस it should have a full rank matrix. Okay, basically we are ignoring the in the कोई जो बीटा नॉट हम लोग इग्नोर ही करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस बीटा नॉट इनसिग्निफिकेंट होता है. ओके, एंड सेकंड वन इज x डैश x, ये जो वैल्यू आएगा x डैश x का, दैट शुड बी positive definite matrix. Okay, if we have rank of x equals to k and x dash x be a positive definite matrix, then according to Gauss-Markov theorem we have a unique solution of the normal equation, and the solution is this. ये जो solution हमने लिखे है, that will be the solution. Okay, but if it is not a full rank matrix, then there will come a error function.
So I don't think error function उतना important है, but I just wrote it down, मतलब लिख दिया मैंने. If you want to study error function, you can do that, but otherwise it is not that much necessity. Okay. Okay, fine. So कहाँ तक पहुंचे हम लोग? ये रहा error function. Okay. So it is basically the we have seen that that ordinary list का estimation is the blue. Previously हम लोग देखे थे जो LSC था, that is the blue, right? So in that case मतलब ये जो हम लोग अभी मिला है x डैश x इनवर्स x डैश y, इसमें भी ब्लू होगा. ठीक है, इसमें भी ये जो B है, ये B मैट्रिक्स, ये B मैट्रिक्स भी हमारा ब्लू ही होगा. So according to Gauss-Markov theorem, that OLSC gives the blue of the regression parameter, regression coefficients beta, right? ये याद रखना. एक और चीज, अगर x डैश x इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब मान लो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स बन गया. सो इन दैट केस वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, राइट? क्योंकि इसका जो इनवर्स अगर 0 हो गया तो हम लोग इसकी इनवर्स कैसे निकालेंगे? देयर इज आल्सो सॉल्यूशन कॉल्ड जी इनवर्स. इसका इनवर्स एग्जिस्ट. इफ नॉट वी विल यूज जी इनवर्स. ठीक है, जी इनवर्स मतलब जनरलाइज्ड इनवर्स. जनरलाइज्ड इनवर्स में क्या होता है कि अगर जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, ऊपर होता है एडजॉइंट ऑफ दिस, नीचे होता है डिटरमिनेंट. इनवर्स निकलने का जो तरीका होता है, उसमें अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग यूज करते हैं जी इनवर्स. ओके, ओके फाइन. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? फिटेड वैल्यू में देखेंगे. फिटेड वैल्यू कैसा दिखता है? तो how is our y hat? Y hat is equals to x into b. It is b, not beta. Okay, so that means uh, sir, how do we find G inverse? G inverse में क्या होता है कि एक फॉर्मूला है G inverse निकालने का. एक इटरेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, हम तो मुझे एक बार व्हाट्सएप में पिंग कर देना, मैं तुमको वो जो इटरेशन का प्रोसेस है भेज दूंगा. 3 स्टेप आता है. ठीक है, पहले एक उसका एक मैट्रिक्स निकालते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं. इससे 2-3 स्टेप है. ठीक है, मैं तुमको भेज दूंगा स्टेप्स. तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं भी उसको थोड़ा यही स्टेप देख के करता हूँ. हाँ, पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स करके कुछ होता है उसमें. 2-3 स्टेप है. ठीक है, रैंक निकल के फिर वही है कुछ. ओके, बस ये याद रखना, अगर अगर हम लोग कभी पूछे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस मतलब पॉजिटिव डिफिनेट नहीं हो रहा है, तो जो ब्लू का हम लोगों ने बोला ना यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसका 2 ही कंडीशन था. एक था फुल लेंथ. अगर फुल लेंथ नहीं होगा तो एरर फंक्शन आएगा, और अगर पॉजिटिव डिफिनेट मैट्रिक्स नहीं होगा, पॉजिटिव सेमी डिफिनेट बन जाएगा. मतलब 0 अगर होगा, 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव सेमी डिफिनेट मैट्रिक्स. तो इन दैट केस वी डू नॉट हैव अ, क्या बोलते हैं उसको, डिटरमिनेंट 0 आएगा. ठीक है, एंड वी विल बी यूजिंग जी इनवर्स. जी इनवर्स तभी यूज करते हैं जब डिटरमिनेंट 0 आता है. ओके, सो y hat इक्वल्स टू एक्स बी. बी मतलब कि हमारे पास जो बीटा हैट आ गया था ना, वही है. तो एक्स है, बी के जगह हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं एक्स डैश एक्स, उसका इनवर्स एक्स डैश वाई. अभी हम लोगों ने देखा गॉस-मार्कov थ्योरम से हम लोग ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बी का. तो दैट इज डिनोटेड एज एच वाई. इसको हम लोग बोलते हैं, इस एच को हम लोग बोलते हैं कि हैट मैट्रिक्स. हैट मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है? एक्स इंटू एक्स डैश एक्स का इनवर्स एक्स डैश. सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज
of hat matrix. First one is it is symmetric. सिमेट्रिक मतलब कि हम लोग H ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग को H मिलेगा. If we transpose the hat matrix, we will get a hat matrix. देखो, if we transpose this, automatically X dash will become X, X become X dash. So we will get this. Next is idempotent. Idempotent का मतलब क्या होता है? What is idempotent? H square equals to H. That means H into H. If we multiply H 2 times, we will get H. Okay, you can do that. If you multiply this, X dash X will be there and it will become this. Okay, next one is trace of H. Trace का मतलब क्या है? Trace का मतलब sum of the diagonals, right? So that is trace of X, X dash X inverse X dash. So that will become trace of X dash X into X dash X inverse. Why? We can write that trace of AB equals to trace of BA. This is the corollary we can use. Okay, so that will become that will become identity matrix trace of IK, that is K. So trace of the hat matrix will become K. That is the thing you have to remember. Okay, कुछ प्रॉपर्टीज है, ये सब चीजें पता नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है ना, तो थोड़ा देख लेना चाहिए. और ये हो गया हमारा फिटेड वैल्यू. उसके बाद क्या होता है? रेसिडुअल्स, राइट. हम लोग पिछले टाइम भी लास्ट टाइम भी किए थे. पहले फिटेड वैल्यू चेक किया कैसा आ रहा था, इसे वाई वाई करके, और उसके बाद रेसिडुअल्स कैसा आ रहा था. और रेसिडुअल्स का भी हम लोग असम्पशन देखे थे, समेशन xi वो epsilon I equals to 0, sum of yi had ei equals to 0, ऐसा कुछ assumptions था. समेशन ei equals to 0. ठीक है. सो इधर भी हम लोगों को रेसिडुअल्स चेक करना चाहिए. सो रेसिडुअल्स y equals to y minus y hat. So what is our y hat? xb, and we can write y minus hy. xb की जगह लिख सकते हैं hy, पहले भी लिखा. So that becomes I minus H into Y. So that is the H dash Y. So hat matrix का हम लोग just I minus H लिया, तो we will get the residuals, right? So fitted value is HY, residuals is H bar Y. ठीक है. So H bar जो H bar है, प्रॉपर्टी उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ H bar क्या क्या है? उसमें एक है सिमेट्रिक. सिमेट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. नंबर 2 इज आइडेम्पोटेंट. आइडेम्पोटेंट निकालना इसका बहुत इजी है. I minus H into I minus H, that will become I minus H. ये आ जाएगा. और 3 नंबर प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ H बार, that will be N minus K. ओके, ट्रेस ऑफ H क्या था? K था. ठीक है. सो ट्रेस ऑफ I माइनस H ये होगा ट्रेस ऑफ I माइनस ट्रेस ऑफ H इक्वल्स टू N माइनस K. Okay, so these are the simple properties. Okay, मतलब we have the residuals and these are the properties of residuals basically. Okay, so next thing is estimation error. What is our estimation error? The difference between B and beta. Beta is the original regression coefficient. B is the regression coefficient from OLSC method. So the difference between B and beta, that is our estimation error. Okay, so that becomes what is B? B is the x bar x inverse x dash y minus beta.
So basically, if we write x dash x inverse x dash in terms of y, we can write x beta plus epsilon minus beta. That eventually become x dash x inverse x dash epsilon. मैं थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूँ, जस्ट तुम लोगों को दिखाने के लिए बस स्टेप जंप कर रहा हूँ। हाँ, ये सब और कुछ नहीं। तो इन दैट केस ये जो एप्सिलॉन आ रहा है ना, इसका एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0. So expectation of b minus beta, that will be x bar x inverse x bar, expectation of epsilon, that is 0. So expectation of b is eventually becoming beta. So from here we can say b is the unbiased estimator of beta. मतलब जो हम लोग पहले भी देखे थे ना कि B naught is unbiased estimator, B1 is unbiased estimator of beta 1. So regression in this multiple linear regression, beta vector B vector is an unbiased estimator of beta vector. कैसे लिख सकते हैं इसे? इसको expectation of B1 B2 Bk equals to beta 1 beta 2 beta k. Just we can express it like this. Okay, मतलब हमेशा याद रखना कि हम लोग जब मल्टीपल इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस आर द कोएफिशिएंट वेक्टर्स. ओके, इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना चाहिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी सर, या is it also valid when our rank, sorry, matrix has not full rank? yes, but in that case the solution is different. Just let me go there. ये जो B का solution है ना, that B's will be different. There will be some addition. Okay, there will be some error terms with this solution. Okay, no? Yes, sir. So when the rank is not full rank, then the solution will be different. The B will be this term plus there will be some other error terms. Okay. Okay. Error term will be like, let me tell you. Wait. Just let me Google it. Just let me check it. Yeah, fine. So in that case, let me write it here. The solution of B, that will be our x dash x inverse x dash y plus I minus hat matrix जो था x dash x inverse x dash x into epsilon. If x is not a full rank matrix. Okay, no, that will be the solution where x dash x inverse it is the G inverse, क्योंकि जब full rank नहीं होगा ना उस टाइम डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा. So we have to find the G inverse of x dash x. So that is the G inverse. So here is also yes x dash x inverse x dash. Okay. मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा निकलना डिराइव करके. ठीक है, समझ गया नु क्या बोल रहा था मैं? Yes, sir. Yes. Okay, fine. Next is okay. So we are talking about the properties. So in multiple linear regression, first property can be like this: key the OLAC is the blue of beta.
First is this. Second, OLAC and MLE. You can also find the MLE, okay, of beta. जैसे हम लोग पहले किए थे. In the case of simple linear regression, we did that, right? So here we can also do that, and both are same. हम लोग तो simple linear regression में भी जब we had used MLE, then we have also found that OLAC and MLE both have same beta naught and beta 1, right? But the difference was in sigma square. Okay, the MLE of sigma square was biased estimator and asymptotic unbiased. And third one is the OLAC is the consistent estimator. So it is also a consistent estimator. इसका भी proof हम लोग कर सकते हैं, लेकिन we are not interested to do that. So just remember this thing, okay? But MLE will be asymptotically consistent, not consistent, okay? Fine. And what about the covariance matrix? कैसा दिखता है covariance matrix? Variance of B. How will be the variance of B? That will be expectation of B minus beta into B minus beta transpose. So that will be sigma square into x dash x inverse. If inverse exists, if full rank exists, if positive definite matrix, ये सब अगर होगा तो in that case we will find the variance of B. These are simple some properties. ये सब properties तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है? ये सब याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा. Okay. Next thing is to find the ANOVA table. देखो regression का जो hypothesis testing है, we have done that. We have done the regression hypothesis testing. If for simple linear regression, for multiple linear regression, everything will be same. That the only difference will be like if you see the coefficient table, if we see the sum of squares, way different. So it is better to wrote down the ANOVA table. So let me write the ANOVA table for multiple linear regression. First one is the source of variation. तो ये तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, वही लिख रहे हैं और कुछ नहीं. एक है रिग्रेशन, एक है रेसिडुअल, एक है एरर, एक है सम ऑफ स्क्वायर्स. उसमें एक होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन, एक आता है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रेसिडुअल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल, एक आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. नाउ this is the time to talk about the degrees of freedom. So in case of regression degrees of freedom, suppose we have k number of independent variables, variables, or you can say no intercept model. जब no intercept model होगा and k independent variables रहेगा, in that case the degrees of freedom will be k minus 1. So in simple linear regression we have two regression coefficients, beta naught and beta 1. Right, so that is why we have used 1 degrees of freedom. So if we have beta 1, beta 2, beta k number of regression coefficients, then degrees of freedom will be k minus 1. And total is n minus 1 is the total degrees of freedom. So in that case, that will be n minus k. N minus k is the degrees of freedom for residual sum of squares. So obviously we can also find the mean square. Mean square is sum of squares due to regression by k minus 1, sum of squares due to residual by n minus. Hello? हाँ, बताओ. So the total degrees of freedom would be nk minus 1, na? How? Like the number of rows times number of columns, ऐसा. देखो, degrees of freedom for total. When we are talking about the total degrees of freedom, that means total variation in y.
So how many observations are present in the model? There are n number of observations present in the model. So sum of squares of total, that is equals to summation yi minus y bar whole square. Okay. So how many degrees of Okay. freedom are for y? N minus 1. All right. All right. So basically you are confusing with design. Yeah, actually, there we Yes. have to dig this thing, two sources of Two variation way that ANOVA. are In the case, same, in na? case of two way ANOVA, we Okay. have n minus 1 into m minus 1, Got something it. like Got it. Got it, sir. that. Okay. So these are the mean square error. I think everyone is clear about it. What is the sum of squares, degrees of freedom, mean square error, and the f. F value will be the MS regression by MS residual. So this is the regression ANOVA for multiple linear regression. तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सम ऑफ स्क्वायर्स रेसिडुअल निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स रिग्रेशन निकाल के बस कैलकुलेट करना है. कभी कभी रहता है कि एक एनोवा टेबल दे दिया, इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग कर दिया और तुम लोगों को फिलअप करने के लिए बोला. ठीक है, हो सकता है. आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बट हो भी सकता है कि एक एनोवा टेबल देके बस उसका कोई मीन स्क्वायर या फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या फिर सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के लिए बोल देते हैं. ठीक है, बोल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है. So in that case, just remember what is the ANOVA table, how to calculate the values of all the cells. बस याद रखो चीजें. Okay, I think we can मतलब आज बहुत कुछ देख लिया हम लोगों ने, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट है हम बोल के खत्म कर देंगे आज. ठीक है. So फर्स्ट वन इज द आर स्क्वायर. आर स्क्वायर के बारे में हम लोगों को थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए. हम लोगों के पास जो आर स्क्वायर था वो कैसे हम लोग निकालते थे. हाउ वी कैलकुलेटेड द आर स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस sum of squares due to residual by sum of squares total, or we can write it like sum of squares regression or sum of squares total. So when we add more and more independent variables or explanatory variables, suppose we have only one explanatory variable, so there is only one variable to explain the whole model. But when we have, so in suppose 5 variables, 6 variables, so we have huge number of variables to explain the model. So when we have more explanatory variables, मैंने इसलिए लिख दिया कि तुम लोगों को बाद में याद रहे चीजें. When we have more explanatory variables, automatically the sum of squares due to regression will be increased, or you can say r squared will be increased. R square increase हो जाएगा. Okay, basically why it is basically over optimistic value. R square will give the over optimistic value when we have seen like this. Okay, so that is why in many cases we cannot use r square. For example, when we have suppose 50 explanatory variables, 50 or 60 explanatory variables, so it is quite difficult to understand the value or the get the value of the r square. So इस केस में हम लोग यूज करेंगे adjusted r square. So what is basically adjusted r square? Adjusted r square is nothing but r square. जो r square यूज करते हैं हम लोग, only what we do, we divide the sum of squares with their degrees of freedom. So if we divide the sum of squares with degrees of freedom, it will automatically balance the number of explanatory variables. So basically 1 minus sum of squares due to residual by n minus k divided by total sum of squares by n minus 1. So
हाउ आई एम राइटिंग इट, मतलब कैसे मैं लिख रहा हूँ ना ये चीज, जो आर स्क्वायर का फॉर्मूला, ये तुम लोग ऐसे ही याद रखो। नहीं तो बाद में क्या होता है कि n-1 ऊपर था नीचे था, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट रिमेंबर लाइक दैट we divide the sum of squares with their degrees of freedom. So here we are actually calculating the mean square of residual by mean square of total. Okay, so this is the thing. This is how we calculate r square or adjusted r square. तो कभी मतलब इसको कंफ्यूजन मत कर लेना कि इन माइनस के कहाँ होगा, n-1 कहाँ पे होगा। Just you remember that we divide it like this, we divide it like the mean square. We divide the sum of squares by their degrees of freedom. So this formula can be written as 1 minus n-1 by n minus k into 1 minus r square. So ये जो फॉर्मूला है हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब we can write it like that. Okay, so here what is r square? R square is the r value of the correlation coefficient, or जो previously used r square, जो था हमारा previously used r square वही है, right? So now there is a case, हम लोग पहले बोले कि स्टार्टिंग में कि जो r square का वैल्यू है that belongs to 0 to 1. R square can be 0, can be 1. If r square is 0, that means no explanation, the regression model has zero explanation. Regression model हमारा जो डेटा है, डेटा जो वेरिएबिलिटी है y का, that variability of y cannot be explained by the regression model. Okay, and r square equals to 1 means that means the model fully explains the variability of y. Okay, if r square is equal to 1, that means the model fully explain the variability of y. Okay, so suppose r square is equals to 0.95. That means 95% of the variability is explained by our regression model, or you can say regression coefficients. 95% variability is explained by the regression coefficients. Okay, तो हम लोग ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक द डिफरेंस बिटवीन द 0 and 1 जो भी है, ठीक है। सो द बेटर द मोर आर स्क्वायर इज बेटर द मॉडल, बट suppose we have k equals to 3. That means we have 3 regression parameters. Okay, we have 10 observations, and we have the correlation coefficient is equals to suppose 0.1. Okay, so if we try to calculate r square adjusted, what will be there? 1 minus n-1 by n minus k. It'll just help me to calculate it. That will be 1 minus 9 by 7 into 0.1. Sorry, 0.9. How much value that will be? 0.9 into 9 divided by 7. That is 1.15. So that means minus 0.16. So here we have the problem. What is the problem? Here r square adjusted is negative, that is less than 0. What does it mean? It means suppose r square adjusted is 0. 0 means the regression model cannot explain. Yes, right, no interpretation. So if r square is 0, we can still interpret it. But when r square is negative, how can we interpret that? So that is the major problem, the major drawback of using an adjusted r square. Okay,
So otherwise, sometimes if you run in hard, Sir, yes or no? we can also set that like we feed our model on those data set which is not fulfill our assumption for the multiple linear regression. If So adjusted underscore is negative, then Statistical is if the adjusted underscore is negative, then we can also say is that we fit our model on those data set which is not fulfill the assumption of multiple linear regression. no, look. We do not have any assumptions about the adjusted square. We only have the assumptions on the error, distribution of error, dependency or independency of the variables. Okay, linearity. These are the assumptions we made. But if the correlation is very low, when it occurs when the r is very low, r square is 0.1, right? Matlab, that means the correlation is like very small correlation coefficient. In that case, it is occurring. Right? No, I don't think there is some relationship between the negative r square adjusted and the assumption. We actually cannot interpret. Okay, we actually cannot interpret. Right. Uh, I think that's enough for today. I think in the next take tomorrow we will see the different assumptions, violation of assumptions like heteroscedasticity, multicollinearity, these type of things we will study. I am hoping that topic, the whole topic will be covered by 3 to 4 days early, because I hope your exams is near, very near. Only 20 days are remaining almost, right? So there are a lot of chapters, lots of chapters, like 10 chapters in the syllabus. This is huge syllabus. So let's see where it's going. Okay, guys. Do you have any question? You guys have any question? If you have any question, feel free to ask me. Uh, I will try to answer it. Okay. ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कल भी तो बैठेंगे। अगर तुम लोग इसको जरा स्टडी कर लो, हम तुमको पीपीटी भेज दे, मतलब जो हम लोग बनाए थे पीडीएफ करके भेज देंगे, ये सब चीजें पूरा इसको रिवाइज करो एक बार, एक चीट शीट बना लो। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू create your own notes for UGC-NET, because this is the first time you are giving it. Okay, so it is very important to create your own note, क्योंकि अगर तुम मान लो इस बार तुम्हारा रैंक थोड़ा कम आए, तुम चाहो कि नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करो एक और बार, तुम पहले से क्यों नोट बनाओगे? अभी नोट बना लो, उसी को मॉडिफाई करके थोड़ा एडजस्ट करके और अच्छे से दे पाओगे। तो आई होप कि एवरीवन डू गेट अ गुड रैंक। स्टिल देयर इज सम फ्लॉस ना, तो एक नोट बना लो, खुद का नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरा जो पीडीएफ है इसको दे दूंगा मैं, इसको यूज करके नोट बना लो एक, that will be very fine. You can follow Gupta Kapoor, or different books are there for regression. We देख सकते हो, there is a note, Syllabus has given a note, internet में available है, वो IIT कानपुर का जो नोट है Syllabus का, वो भी देख लो एक बार। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके गाइस, ओके।